This 32-year-old woman took her own life on the night of 25th of June in Hyderabad city's Shamshabad area. She was a software engineer. और ये पहली बार नहीं था कि उसके पति ने उसको मारा था. According to her father, उसका पति और उसके in-laws उसे बहुत harass करते थे because she was not able to get pregnant. This man started beating his woman colleague with a stick and kept abusing her because she asked him to wear a face mask as per COVID-19 norms. The man is a senior employee of the State Tourism Department in Andhra Pradesh's Nellore town. He has been arrested and sent to judicial custody. An 18-year-old girl was gang raped by 7 men for 5 hours in Madhya Pradesh's Betul district on April 29th. उन 7 लड़कों में से 3 लड़के माइनर हैं और वो लड़की अपने भाई के साथ बाइक पर घर जा रही थी जब इन 7 लोगों ने उन पर अटैक किया. In just the month of April, Haryana recorded 66 rapes, 142 cases of molestation, 117 cases of dowry abuse and death, and 62 cases of kidnapping. In the same period, Punjab recorded a surge of 50% in the cases of domestic violence. You know, domestic violence complaints have reached a 10-year high in this COVID-19 lockdown period. मतलब कि लॉकडाउन के इन 4 फेजेस में जितने डोमेस्टिक वायलेंस कंप्लेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, उतनी पिछले 10 सालों में रिकॉर्ड हुई थी. दिस डेटा इज बाय द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन. और ये 10 साल वाला हाई इज नथिंग बिकॉज 77% औरतें अपने ऊपर हुए डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में किसी को नहीं बताती हैं और 86% औरतें उसके बारे में कंप्लेंट ही नहीं फाइल करती हैं. डोंट वी ऑल नो व्हाई? Fear of more harassment by the husband and in-laws, lack of support from their own families, social stigma, uncertain future because of lack of opportunities for them even if they decide to leave their abusive households. And if they have children, it becomes all the more impossible for them to even think about leaving their abusive husbands. There's a reason why divorce is still considered a taboo in India. And to make matters worse, is lockdown में there has been an increase in unemployment. Sources of income have dried up. Millions of people have been pushed into poverty. They are hungry and suffering immensely in this pandemic. जिसकी वजह से लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एंगर, इम्पेशंस एंड डेस्परेशन बहुत बढ़ गया है घरों में. और ये सब गुस्सा निकलता किस पर है? ऑन द मोस्ट वल्नरेबल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, women. They face it in all forms: physical, mental and sexual abuse. So if you are a victim of domestic violence, then you should definitely consider these steps. सबसे पहले तो प्लीज किसी को बताओ कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है. ये कोई भी हो सकता है, तुम्हारे आस पड़ोस में तुम्हारी सहेली हो या फिर कोई रिश्तेदार हो करीबी. प्लीज डरो मत. बहुत सारी एनजीओज और सरकारी एजेंसीज जैसे नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने हेल्पलाइन नंबर्स चालू करे हैं. प्लीज कॉल करो उन नंबर्स पर, वो तुम्हें सही गाइडेंस देंगे. और प्लीज ये तो बिल्कुल मत सोचना कि गलती तुम्हारी है. चुप रहने से सिर्फ अब्यूजर का फायदा हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा. और अगर एनजीओज की भी काउंसलिंग काम में ना आए तो प्लीज पुलिस कंप्लेंट करने में हेजिटेट मत करना. और अगर आप किसी को जानते हो जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज हो रहा है तो प्लीज रीच आउट टू देम. चुप मत बैठना. और ये मत सोचना कि ये किसी और के घर का मामला है और हर घर में तो हल्का फुल्का वायलेंस चलता ही है, नॉर्मल है ये सब. नहीं, नॉर्मल नहीं है ये सब. द फैक्ट दैट हम सबने इसको नॉर्मल बना दिया है ही वजह है कि ज्यादातर औरतें डोमेस्टिक वायलेंस इंसिडेंट्स के बारे में किसी को बताती नहीं है. इसीलिए इफ यू नो समवन हु इज फेसिंग वायलेंस एंड अब्यूज एट होम, प्लीज रीच आउट टू देम. डोंट डिस्टेंस योरसेल्फ. आई नो देयर माइट बी फ्यू कमेंट्स ऑन दिस वीडियो वेयर सम पीपल might say that men are also victims of sexual violence and abuse, and why haven't you spoken about them? Yes, I get it. But tell me one thing, how many instances have you heard of women raping men, women abusing men, women beating up men, women molesting men, women kidnapping men? I'm not saying that all men are bad, but those men who abuse their wives, daughters, sisters, or any woman or a man for that matter need to know that they cannot go on doing this forever and that they will be severely punished. And for those men who say they're not bad, it's time they stood up and helped in bringing an end to this culture of violence and abuse. Because if we're all bracing for a new normal in this post-coronavirus world, we really need to rethink about how we treat and look at all the genders. Yes, I'm thinking aloud, but what do you think? Tell me in the comments below, and if you like this video, then share it and subscribe to India Times.